Hey guys, good evening. Merry Christmas to you all. So, just now I actually started my live and I have to end it because I believe that there was no sound. So, before I start, I would like to know whether I'm audible, I'm visible. Am I audible, guys? Am I audible? Am I visible? If anyone is there, they can tell me. Hello, 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 hello. Welcome to Chai Par Chacha. And as I always say that this is a platform. Okay, yes, thank you. Thank you so much, Akanksha, for giving me that confirmation because I had to end my live because I believe that there was no sound because earlier it was on speaker and headphone and then I removed the headphone. Technical issues. And we are still learning, right? Okay, thank you. Thank you so much for coming and joining today. So, today being a Christmas day, celebration day, I thought why not personally we should come on this platform and greet each other, right? So, I'm on my holiday trip. I have come to London to meet my daughter. My daughter just got graduated and it's a pride moment for me and you can congratulate me, so thank you so much. I'm just taking the congratulations from you guys. Great. So today I'm with my nephews and then I was just remembering the old days of mother, mom, when I'm talking about probably how many lots of years back when I used to hide gifts and when I used to say कि वो Santa आएगा वो gift लेके आता है आपके, and we as a mothers used to go and hunt those kind of gifts for children and hide it and put it in a in the socks and keep it for our kids, isn't it? So I think somewhere we lose that what you can say that connect over the time as we grow up. My experience is कि even though you are a grandmother or parnani or pardadi, you should make that excitement alive in your kids, which I also do not do sometimes, but then I feel we have to, right? And for me, like festivals are not for religion based. For me, always festivals are a kind of celebration together. We are together, all of us. Otherwise, हम सब कुछ ना कुछ different काम कर रहे होते हैं. But जब वो festival आता है, तो हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं, right? So before I start, and I will talk to you and let me see whosoever is there on the live right now and people who are watching now. Thank you so much. Welcome to all my viewers, every who are frequent listeners to me. Thank you so much. Welcome. I welcome you personally. And who are new to this platform, I would like to introduce myself. I'm Vandana. I'm Vandana Kohli, and I'm also known as Windy Kohli. People call me Windy Kohli as well. And so I'm a holistic healer, and on this platform, I'm your accountable partner on this holistic well-being journey. So when we talk about holistic, so holistic means that we all need well-being in all the factors of our life, all the segments like physical, mental, emotional, spiritual, and as well as financial, right? So financially कैसे हम बन सकते हैं जब हमारे ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो क्लियरली हमारे साथ अलाइन है. Those factors are having rhythm within each other. So life is all about rhythm, guys. So rhythm missing है तो सब कुछ मिस हो जाता है. So rhythm is always like अगर आप ECG कराने जाते हो तो it has to be in rhythm, isn't it? Then your heart is working well, everything is perfect. And as soon as it goes like this और ऐसे हो गया तो खत्म, correct ना? So that is why rhythm is important. So we just need to work on our rhythm. That physically how we are aligned, how my thoughts are aligned, with my emotions, how my feelings are aligned with my emotions. So all needs to be synchronized, aligned, and then only you can, have a blissful and wonderful life ahead. Right? So before we go ahead, let me make you
as usual, my favorite thing to make you, to bring that rhythm, let's connect it with some music. Hey, Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing laughing all all the the way. way, Bells on bobtail ring, making spirits bright. what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is bright, colors bright your young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Hear the bobtail bay, 240 for his speed. and hitch him to an open sleigh, and Who will take the lead? Oh, jingle bells, jingle all the way. oh, what fun it is to ride in a one-horse open Say, sleigh. hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yes, guys, Merry Christmas once again. So, did you feel something inside when you listen these kind of songs? तो मेरे अंदर तो एक जो अंदर एक बचपन होता है वो हम सबके अंदर रहता है और हम उस बचपन को मार देते हैं ओवर द टाइम. सो ये जो फेस्टिवल्स हैं, ऐसी चीजें, ऐसे सॉन्ग्स, ये सब चीजें आपका वो बचपन दे ब्रिंग इट बैक. So let's be in a moment and enjoy those moments. Merry Christmas, Minnie. Thanks for joining. So it's just that I thought, okay, it's a Christmas time, so why not? I should connect with my community and I should talk to them one on one and celebrate together. So how's your day, guys? How's your day gone? So today ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है लर्निंग का, जो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग आप लोगों के लिए लेके आती हूँ. आज मैंने सोचा just to say hi to you guys and just to make you remind those old days of yours, जब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे और हमें अच्छा लगता था गिफ्ट्स देने, सब कुछ करना, तो कैसा लगता था. तो मैं समझती हूँ कि सैंटा इज लाइक अ जिनी, कि जैसे ही आपने कहा ओ आका बताओ क्या चाहिए. सो द लाइफ इज ऑल अबाउट दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Ginny is all about law of attraction. I'm in Dalhousie enjoying with friends. Oh my God. So very nice, very nice, very nice. So send pictures, yeah. तूने तो साधना, हे साधना, मेरी क्रिसमस. मैं साधना आपको याद कर रही थी थोड़े दिन पहले. मैंने कहा पता नहीं साधना को पता भी है मैं लंदन आई हुई हूँ. So I'm in London, guys. I would like to tell you that I have come to meet my daughter. So my daughter just graduated in sports management. Post graduation, she's finished, and she passed with distinction. And I'm a happy mom, and I'm taking the congratulations from you. So thank you so much. And so I've come for her graduation, and now the trip is little longer. From here, I'm going to meet my another daughter who's in US, so it's a long trip, but yes, don't worry, I'll be connected with you. So एक तो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है, दुनिया इतनी पास हो गई है, दुनिया दूर है ही नहीं है, है ना. तो हम सब पास हो गए, एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं. तो अब इस फास्ट पेस में हमें कैसे कनेक्शन बना के रखने हैं, कैसे प्यार बांट के रखना है. सो आई डोंट नो. कंग्रेट्स, थैंक यू साधना. Yes, and Merry Christmas. Thank you so much. So yes, मेरी काफ़ी सारे फ्रेंड्स को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, और because it's been just 1 week back I came here, and it was just crazy going to to her graduation and then remembering my old times.
सो द टाइम इज चेंज्ड, आप इवॉल्व होते जाते हो अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, राइट? So this time, so I would like to, introduce this program of Divine Moms Hub. So this is a community which I have created, and why I'm doing what I'm doing. So it's a big story, yes, absolutely. But then, why I'm doing is because I feel the mothers have power, right? The mothers have power to do anything in the life, because they have power to bring up the kids. They have a responsibility of bring up the kids. So parenting is a very important factor in the life. So right now I'm with my nephews and my nieces here. Yeah, you can come and take. So this is my grandson. Hey, say hi here. Hello. Okay, so now I have come here to be with them on this particular festival. And then we were only talking about that how important is, it's not important to teach kids, it's important to teach me as a parent. It's important to bring that shift in me. It's important that I should be watching my actions, what I'm talking, how I am eating, how I'm smiling, how my words are, how my thought is, more than words, like what I'm thinking in my head. So if suppose there is a tension on mother's head, the child will pick up, So as a mother, we have all the time responsibility. Now today I'm a grandparent. Still I feel it's much more a major responsibility of mine, to make my thoughts in a right forum, isn't it? Because if my thoughts are not in a right forum today, also when my kids are also become mothers, they still look at your moms. The बच्चे हर समय अपने पेरेंट्स को देखते हैं, बेशक वो आपके फादर हैं या मदर हैं. तो हमें एज अ पेरेंट्स we need to work on ourselves. So this program is all about that. Hi Madhu, Merry Christmas. Thanks for joining. Nice to see you. Nice to see you. So अभी मेरी सारी friends अभी join कर रही हैं, and I'm finding it so happy and so thrilled. मुझे लग रहा है जैसे अभी मैं 7वें आसमान पे हूँ. Thanks guys for joining me. और तो मैं जस्ट जनरल आप लोगों को सोचा आज विश करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आके, and we will just talk about that how parenting is important. Okay, so Sadhna, Madhu, Mini, all of you are there. So just tell in one word in the chat box that how do you think the parenting has any role in bringing up the kids in whatever the kids are today. Do you think parenting has played any role over there? पेरेंटिंग का कोई हाथ है जो बच्चे आज आपके जैसे भी हैं वैसे हैं? क्या कहते हो आप? यस, नो, 2-3 सेंटेंसेस. बिकॉज इसमें ये है कि लैपटॉप पे जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो आई एम अनएबल टू कॉल पीपल फिजिकली एंड टॉक देयर. तो हम लोग मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं. जस्ट पुट योर मैसेजेस देयर. सो इन द मीन टाइम पीपल आर राइटिंग. So let me tell you that, as I said, that the Santa is like a genie, and genie always works for us. But genie only works अगर हम लोग क्लियर हैं अपने हेड में कि हमें क्या चाहिए. तो हमें किस पे काम करना है? अपने हेड पे, अपने माइंड पे. So जब तक हम लोग अपने माइंड पे काम नहीं करेंगे, माइंड एंड बॉडी नीड्स टू बी कनेक्टेड. सो तो जब तक हमारे माइंड और बॉडी नहीं कनेक्ट होंगे, तब तक हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों में कमियां फील होंगी. Hey Manju, hi Manju ji, hello, hi, how are you? So Manju Sinha is, yes, so I was with her in Baramati for a very long time. So all my today friends are connecting, which I'm really feeling nice about it. Thank you guys, thank you, and wish you a very very happy new year as well. बिकॉज नया साल आने वाला है, और क्रिसमस हमारी हर साल आती है ना. दिवाली हर साल आती है, हर साल ये फेस्टिवल्स आते हैं. तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ कि जब हर साल ये चीजें आती हैं तो क्या आप लिखते हो कहीं पे?
आप लिखते हो कि इस साल आपने क्या फील किया, आपके पास कोई ऐसा, आपने अपने लिए कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म या अपने लिए आपने कोई ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई चीज बनाई है जहां पे आप अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की वैल्यू कर सको? हैव यू डन दैट गाइस? यस और नो? Yes or no? Then I will tell you what you can do that. Do you want me to tell you that what you can do that and how that can help you? So tell me yes or no. Have you created any diary or any notebook? If you have not done it, then I think today you are on this platform listening me, talking to me is not just like that. Yes, but sometimes. Great, Manju. सो अगर आप मुझे ये अभी सुन रहे हो मंजू, या मेरे इस प्लेटफॉर्म पे अभी आप लोग बैठे हो, अभी आए हो इस दिन, इवन टुडे इज अ फेस्टिवल डे, बट आप सब कुछ टाइम निकाल के मेरे पास आए हो, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बिगर, यू नो, फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, because it's very important for each one of us that why we are doing what we are doing, even to listen someone, even to come to a platform like this and listening some on unknown people. A lot of people find me that they don't even know me, but still you are opening and clicking and listening even for 5 minutes or 10 minutes. It means that there is something which universe wants to connect with you, you know. I believe in it because I believe कुछ भी चीज just like that नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई reasons होते हैं चीजें होने के लिए, कुछ ना कुछ। तो क्या पता आपकी एक छोटी सी आदत मेरे थ्रू बननी हो आज, you never know. So it's very important कि आप एक separate diary you keep it for yourself where you are writing every year what the progress is happening. अब एक साल पहले क्या हुआ था, अगर आप एक साल के बाद लिखोगे definitely you will not remember, right? So how you are going to continue doing that? Like today is for example, at least बैठ के इतना सोचो कि last Christmas पे, क्योंकि हमें फेस्टिवल हमेशा याद रहते हैं, यू नो, कि लास्ट क्रिसमस पे क्या हुआ था, उसको मैंने ये गिफ्ट दिया था, कभी नहीं हम भूलते, हम कभी गिफ्ट रिपीट नहीं करते। वेरी रेयर कभी होता है कि हमारा गिफ्ट पास ऑन हो जाता है किसी सेम बंदे को जिसको दिया होता है, तो बट अदरवाइज वी नेवर रिपीट द गिफ्ट, वी नेवर रिपीट द क्लोथ्स। यस और नो? वी नेवर रिपीट द क्लोथ। अरे लास्ट दिवाली पे भी मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, अब फिर से पहनूंगी, फोटो में आ जाएगी, और कुछ नहीं तो फोटोज याद करा देती हैं कि आपने वो साड़ी पहनी थी, वो ज्वेलरी पहनी थी, यू नो, वैसा मेकअप किया था, वैसा हेयर स्टाइल था, करेक्ट? बट ये सब याद रहता है, बट मेरी सोच क्या थी, मेरी फीलिंग्स क्या थी, यू नो। is experiencing performance issue, try application of browser tabs, close unused applications. अच्छा, I don't know. Okay, so sorry, बीच में कुछ इंटरप्शन बार बार आ रही थी तो मेरी डिस्ट्रैक्शन हो गई। ओके, सो तो हमें ये नहीं याद रहता है कि मेरी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे, मैं कहाँ से इवॉल्व हुई हूँ, एक साल पहले मेरी सोच क्या थी, बच्चों को लेके, घर को लेके, हस्बैंड को लेके, मदर इन लॉ को लेके, या फिर सोसाइटी को लेके, या फिर अपने करियर को लेके, यू नो, मेरी क्या सोच थी उस टाइम पे, आज मेरी क्या सोच है। टुडे हाउ आई एम थिंकिंग, टुडे हाउ आई हैव इवॉल्व फ्रॉम दैट कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। अब उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में बहुत सारी चीजें हुई होंगी, इजंट इट? एक साल पहले और एक साल के बाद आज, तो आज आप एटलीस्ट वो लिखिए, यू नो, रात को सोने से पहले। यू मस्ट डू दैट, एंड आई मस्ट टेल यू, अगर आप ये करना शुरू करोगे ना, you will actually thank me, and please pick up the phone and thank me, so I will also get motivated and inspired by your talking when someone calls or someone tells. तो मुझे भी इंस्पिरेशन चाहिए होती है ना, तो जब आप मुझे बोलोगे कि हाँ दैट हेल्प मी, डेफिनेटली दैट्स इंस्पिरेशन टू मी गाइस। तो आप आज लिखिए कि आपके अंदर क्या शिफ्ट आया है पिछले साल से इस साल तक, और फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए एवरी डे। तो पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है कि ओके, आज के दिन मैंने क्या सीखा, सिर्फ ज्यादा लंबा नहीं करना है, आज के दिन मैंने क्या लर्न किया, आज के दिन मैं कितना ग्रेटिट्यूड फील किया,
आज के दिन अगर मैंने ब्लेस फील कर रही हूँ तो किन चीजों से ब्लेस फील कर रही हूँ। आज के दिन मेरे बच्चे ने क्या नया सीखा, क्या नया बोला। आज के दिन मैंने किसको माफ किया, किससे किससे मैंने फॉरगिवनेस मांगी, किससे मैंने कनेक्शन में जिनके साथ मेरा रिश्ता टूटा हुआ था मैंने वापस उसका रिश्ता जोड़ा। आज के दिन मैंने क्या किया। अगर आप ये 5 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप एवरीडे करोगे, you will see drastic change, guys. And today I am here on this platform is not by chance. You know, it's not by chance. It was planned. It was, see, मैंने planned बोला तो मेरी healing bell चल पड़ी है। And I again believe that हमेशा यूनिवर्स आपको इसके सिग्नल्स देती है, आपको यूनिवर्स कनेक्ट करती है, आपको यूनिवर्स बताती है कि जो जो आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो, वो आप कनेक्ट हो रहे हो यूनिवर्स के साथ। सम एनर्जीज, सो वी ऑल हैव एनर्जीज अराउंड अस, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखने के लिए मुझे मोमेंट में रहना जरूरी है। और मोमेंट में हम सारा दिन नहीं रहते हैं, हम मोमेंट में बहुत मुश्किल से रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जर्नलिंग करना, लिखना, अपनी इमोशंस को कैप्चर करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक यू बी इन द मोमेंट, राइट। So guys, how are you? How are you finding it? This small chit chat. Are you enjoying it? ये तो कई बार मुझे लगता है मैं खुद ही बात करी जा रही हूँ और पता नहीं आप लोग enjoy भी कर रहे हो या नहीं. Okay, Minnie is saying okay, thumbs up and smiley. Thank you. Okay, guys, enjoying it? Enjoying it, guys? Any question anybody has? Any question anyone has on this or any other thing, you know, any other thing which you are facing, which you are feeling कि certain things are not you are doing certain things but still you are not getting the right results. Are you stuck somewhere? Any question if you have? Thank you Manju ji, thank you Manju. Okay, fully enjoying. Great. Any questions you have till now? Any question? कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन हो। कई बार हमें बहुत सारी कंफ्यूजन रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, या फिर हमारी मेंटल फ्रेमवर्क को लेके काफी हमारे लाइफ में हमें कंफ्यूजन्स रहती हैं, है ना। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी कंफ्यूजन है तो जरूर आप लिखिए ये प्लेटफॉर्म। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आती हूँ ये आधा घंटा के लिए हर हफ्ते। सो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कोई ज्ञान बांटना है, नो, इट्स अबाउट दैट आई हैव रीच हियर विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। इट्स नॉट दैट इट वाज इजी एंड अभी मुझे इजी लगता है सब कुछ, बिकॉज जब आप स्मूथली इवॉल्व होना शुरू हो जाते हो तो आपको चीजें आसान लगने लग जाती हैं। बट जब आप अपने प्रोसेस में होते हो तब आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, isn't it? So I have crossed those challenges and that's how I am still here and sitting with you, and I really wanted to solve your issues, solve your problems. And if you are stuck somewhere as a mother, as an entrepreneur, as a anything personally you are feeling where nobody is listening you, and sometimes, like I always say, that this is a kind of a confession box. Confession box means that you can talk. If you wanted to talk to me one on one, I will share my link here. You can select your timings and you can talk to me. So we can have 30 minutes clarity call and we can create your journey in that 30 minutes, and we'll understand if you that how you can go ahead on this healing journey. So healing is a ongoing process, guys. It's not कि आज हो गई और कल नहीं होगी. So it's ongoing process, and what I do is कि I teach you your habit formations, your things which should come into your practice day to day, कि क्या चीजें हमें अपनी प्रैक्टिस में, अपनी सोच में हर रोज लेकर आनी है, हर रोज अपनी सोच को किस एंगल से लेके जाना है. That's what my job is, to make you connect, to make you into rhythm, in all these sectors. Right, guys? So
I hope that you enjoyed this session, and as usual, I always wanted that everybody should write their key learnings from this session, whatever you have learned, as this is a kind of motivation to me as well. So thank you so much. And if any questions later on also comes to your mind, you can even send me a direct message, that you can DM me, where I can, if you don't want to share, sometimes you do not want to share your things in front of people, but that's okay. You can even, I always say कि healing starts जब हम लोग सबके साथ share करते हैं, क्योंकि healing में क्या होता है कि जब हम अपना क्वेश्चन पुट करते हैं, यू नेवर नो, अननोइंगली यू आर हीलिंग अदर्स. जब आप कोई आंसर देता है आपके क्वेश्चन का, तो आपको तो अपना आंसर मिलता ही मिलता है, लेकिन आप साथ ही में 2 और लोगों को हील कर रहे होते हो इनडायरेक्टली. सो इट इज सो नाइस, सो जैसे जैसे ये मेरी लाइफ में होता गया ना, वैसे वैसे लाइक लिटरली मेरे अंदर और पॉजिटिविटी आती गई, क्योंकि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स इनडायरेक्टली मिलती गई. सो यू नेवर नो कि आपको किस एंगल से ब्लेसिंग्स मिले अपनी लाइफ में. तो नेवर स्टॉप योर ब्लेसिंग्स एनीवेयर, नेवर स्टॉप योर ब्लेसिंग्स एनीवेयर, क्योंकि ब्लेसिंग कभी भी किसी भी एंगल से आ सकती है, किसी भी ढंग से आ सकती है. सो ऑलवेज मेक योर हैंड्स एंड मेक इट लाइक दैट कि ओके, let the blessing comes. I'm there to embrace those blessings. So अपने अंदर की ना चीजों को अनलॉक कीजिए आप लोग. जब हम अनलॉक नहीं करते ना, हमने एकदम से अपने आप को ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, इसको खोलना है, तो वो एनर्जी को हमें ढूंढना है. राइट? ओके, so thank you so much. And before I say bye to you, how many of you are interested to know, to want me to, in fact, I want from you guys to give me the topics, that in what topic would you like to listen more, in what topic you wanted to educate yourself, or in what topic you want that the confusion का जो fog है वो निकल जाए. आप मुझे topic दीजिए. And how many of you are interested to know more about chakras? Do you think कि chakras are a part of our life and chakras help us in healing? Yes or no? Anybody will reply in the chat box that कितने लोग ये समझते हैं कि chakras का हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं chakras. किसी ने सुना है आप लोगों में से जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे? Have you heard about chakras? That what are chakras? Tell me. Yes, no. कोई जना टाइप करेगा नीचे. So sometimes in these lives we don't even get to know that the people are watching you or not. But that's fine, if you are watching now or you are watching later in recording, please do type. As I say that when we type, when we evolve, तो होता क्या है कि हमारी मसल मेमोरी में चीजें जाती हैं, और जब वो मसल मेमोरी में जाती हैं तो क्या होता है, तो हमें याद रहता है, वो हमारे सिस्टम के अंदर रहता है. राइट? ओके, मिनी सेइंग एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी. यस. एंड मिनी, डू यू प्रैक्टिस? One second thing is that do you want me to talk on chakras, some of the sessions on chakras and some videos on chakras? Do you want me to say something about it? Do you people like this subject where I should talk about, because that's my favorite subject, and that's what I am actually, that is helping me still now, to heal myself, because as I said, the healing is a lifelong process. So you need to keep healing yourself every moment, every day. Right, guys? Okay, so yeah, I do practice. Would certainly like to hear from you. Okay, thank you so much for giving me the opportunity to work on that. Absolutely, we will do that, and we'll keep bringing these kind of topics. And I wanted a audit thing from you कि till now जो मैं डाल रही हूँ platform पे, how are you people connecting with it? Do you have any disconnect over there? Any subject, anything where you feel you wanted to
go a little deeply on. Like there are topics which I covered is mindfulness at workplace. I have covered the topics personally and professionally, how you can make yourself comfortable and balance yourself. So a lot of topics which I have covered. So please go through my videos, previous ones, and let me know. I'll be excited to reply you guys. So thank you so much. Merry Christmas. And once again, I'm signing off. And मिलते हैं break के बाद. Right? Take care. Love you.